And the worst hit city in the country at the moment is Delhi, the national capital. And for Delhi, the next few weeks are critical. To face this challenge now, the Arvind Kejriwal government has been forced to revamp its strategy. It's begun conducting house-to-house screenings, especially in the containment zones across the national capital. That process started today. Here's a report. Delhi, India's worst affected COVID city, is now ramping up efforts to fight the virus and contain its spread. Bracing itself for the mounting challenges ahead, the Arvind Kejriwal government has revamped its strategy. जून के पहले हफ्ते में जहां डेली 5,000 टेस्ट हो रहे थे, आज दिल्ली में 20,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। देश में लगभग सबसे ज्यादा टेस्ट डेली दिल्ली में हो रहे हैं। 20,000 टेस्ट डेली। The Delhi government will begin house-to-house screening and response in containment zones from June 30th. The rapid antigen tests will also be used for screening population in the containment zones. The same strategy would be followed in the rest of the national capital from July 6th. The National Centre for Disease Control along with Delhi government will also start a survey which will be based on antibody blood samples. These samples will be taken to figure out a citizen's past exposure to the virus which causes COVID-19. ये एक नए तरीके का टेस्ट है, इसे हम सीरो टेस्ट बोलते हैं। सीरम से लिया जाता है, ब्लड से लिया जाता है। आज पूरी दिल्ली में इसकी शुरुआत हो रही है। इससे ये पता चलेगा कि आपको पहले कोरोना हो चुका है क्या। हो सकता है अभी आप ठीक हों, लेकिन पहले हो सकता है होकर ठीक हो गया हो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, तो इसको एंटीबॉडीज टेस्ट बोलते हैं या सीरम टेस्ट है ये। This sero survey has been launched and will be covering 20,000 people across 11 districts of Delhi. कोरोना से युद्ध में 5 हथियार तैयार किए गए। पहला हथियार, बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। दूसरा हथियार हमारा था टेस्टिंग एंड आइसोलेशन। तीसरा हमारा हथियार था कोरोना की लड़ाई में, तीसरा हथियार है ऑक्सीमीटर्स एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। चौथा हथियार है आज कोरोना के इस खिलाफ युद्ध में प्लाज्मा थेरेपी। इसमें दिल्ली ने पूरे देश के लिए एक तरह से रास्ता दिखाया। और पांचवा हथियार है सर्वे एंड स्क्रीनिंग। आज से दिल्ली के अंदर सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू हो रहा है। 20,000 लोगों का सेरोलॉजिकल सर्वे होगा। घर घर के अंदर जाके सेरोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं। Meanwhile, Home Minister Amit Shah and Chief Minister Arvind Kejriwal inspected the 10,000-bed COVID center set up at the Radha Swami Satsang Vyas Center in Chhatarpur. With cases of COVID-19 surpassing in the national capital that of the state of Maharashtra, it's a Herculean task ahead for Chief Minister Arvind Kejriwal. The government has in fact started the door-to-door screening to make sure that they can contain COVID-19. Chief Minister Arvind Kejriwal says that his government is fully ready to tackle COVID-19 and in days to come they'll make sure that every patient is treated and is recovered as soon as possible. This is Aishwarya Paliwal reporting for India Today with camera person Pradeep Gupta. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.